गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज ये हमारे सोनू भाई हैं। इन्होंने मम्मी को थोड़ा चैलेंज किया है कि मैं एक आज स्पेशल डिश बना के आपको दिखा रहा हूँ और खिलाऊंगा भी। अभी इन्होंने मसालों के नाम नहीं बताए हमको और इन्होंने इसमें कई चीज़ें टॉप सीक्रेट रखी हुई हैं। ये इन्होंने देखिए आगे चल कर के इन्होंने प्याज काटा है, ये सब कुछ तो दिख रहा है, लेकिन कुछ इसमें सीक्रेट्स भी हैं। वो सीक्रेट्स आप आगे जानेंगे। देखिए ये इन्होंने सूजी ली रखी है और सूजी के साथ इन्होंने मुझे बताया है कि ये पानी इन्होंने ले रखा है, तो जितनी सूजी होगी उसका जस्ट डबल पानी होगा और इन्होंने पानी ये गर्म भी किया है। अब बस इसी जगह पे कुछ सीक्रेट है। अब इन्होंने प्रोसेस चालू किया देखिए बनाने का, और इन्होंने तेल डाला है। तेल डालने के बाद इन्होंने जीरा डाला है मेरे हिसाब से। अभी ये सब कुछ सीक्रेट रखे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं जब आप कहेंगी कि वाकई बहुत अच्छा बना है तब मैं बताऊँगा इसके इंग्रेडिएंट्स कि इसमें क्या क्या डल रहा है। अब इनका प्रोसेस देखिए चल रहा है। अब देखते हैं गाइस कि ये आज जो इनका एक चैलेंज है कि आंटी आपको मैं आपसे भी अच्छा बना के कुछ खिलाऊंगा और आप पूछने पे मजबूर हो जाएंगी कि इस डिश की मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसे बनाया है, उसमें मेन ट्रिक्स क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए इनका प्रोसेस चल रहा है, बढ़िया से ये काम कर रहे हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा था क्योंकि मैंने इनका एक सीक्रेट पकड़ा है। इन्होंने जो ये डो तैयार कर रहे हैं, इन्होंने आलू डाला है इसमें और सारे मसाले हैं इसमें, लेकिन इसमें इन्होंने इसको जो भुना है वो बहुत ही धीमी आंच पे और लगातार इसको चलाते रहे हैं कि ज़रा सा भी कहीं लगे ना। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं की है इन्होंने, और इन्होंने इसको भूनने में पूरी अपनी मतलब पूरा मन से, इसको पूरे मन से भून रहे हैं। तो ये भी शायद इनका कोई टॉप सीक्रेट हो सकता है इस रेसिपी के बीच में। तो आगे देखते हैं कि आखिर क्या बन के निकलता है।
ये क्या किया है इन्होंने, ये एक सीक्रेट है, बाद में बताएंगे। That's amazing. Wow, that's amazing.